Well, such a joyous and such a happy day today. Post the successful IPO subscription of Physics Wallah Limited, here we are today for a significant milestone towards the listing of the company's equity shares at the National Stock Exchange. Physics Wallah Limited, popularly known as PW, is one of India's most trusted and fastest growing education companies committed to making high quality learning accessible and affordable for every student. What began in 2014 as a single YouTube channel by a visionary educator, Alak Pandey, has today transformed into a nationwide education system spanning online learning, offline and hybrid test prep centers, skilling programs, and professional courses. Focused on academic excellence, affordability, and innovation, Physics Wallah continues to play a pivotal role in shaping the aspiration of India's youth and strengthening the country's education landscape. Well, ladies and gentlemen, it's now my privilege to welcome a visionary leader who has been at the forefront of shaping India's capital markets. Please join me in extending a warm welcome to Shri Ashish Kumar Chauhan, Managing Director of CEO of the National Stock Exchange of India. Let's give an applause for him while he is here. We also have Mr. Sri Ram Krishnan, Chief Business Development Officer, National Stock Exchange. Thank you. And from the company, it is an honor to have with us here today Mr. Alak Pandey, Whole-Time Director and CEO, Physics Wallah Limited. Then we have Mr. Prateek Maheshwari, Whole-Time Director, Physics Wallah Limited. Mr. Deepak Amitabh, Chairperson and Non-Executive Independent Director. Ms. Rachna Dikshit, Non-Executive Independent Director. Mr. Nitin Savera, Non-Executive Independent Director. Mr. Sandeep Singhal, Non-Executive Nominee Director. Mr. Amit Sachdeva, CFO. Well, we deeply appreciate your presence on this special and a momentous occasion today. I would also like to extend a hearty welcome to the book running lead managers who've played an integral part in the success of this issue. We have with us here today Mr. Chandresh Chedda, MD, JP Morgan India Private Limited. Mr. Shubham Majumdar, MD, Kotak Mahindra Capital Company Limited. Mr. Sudarshan Ramakrishnan, Co-Head Investment Banking, Goldman Sachs India Securities Private Limited. And Mr. Arvind Ganeshan, MD, Axis Capital Limited. Along with them, let's give an applause to all their team members as well, everyone. Thank you. Thank you so much. Well, to mark the auspicious beginning of today's landmark, we have here our esteemed dignitaries who've joined us here. Now we'll be moving towards the ceremonial lighting of the lamp ceremony. I will request our distinguished guests to please step forward as I announce your name and join us on the stage. Starting with, I would like to invite Shri Ashish Kumar Chauhan, MD and CEO, NSE, Mr. Sri Ram Krishnan, CBDO, NSE, Mr. Alak Pandey, Whole-Time Director and CEO, Physics Wallah Limited, Mr. Prateek Maheshwari, Whole-Time Director, Physics Wallah Limited, Mr. Deepak Amitabh, Chairperson and Independent Director, Ms. Rachna Dikshit, Independent Director, Mr. Nitin Savera, Independent Director, Mr. Sandeep Singhal, Non-Executive Nominee Director, and Ms. Deborah Quazzo, Managing Partner, GSV Ventures. Let's welcome them on stage for the ceremonial lighting of the lamp.
Thank you to all our dignitaries for gracing this occasion. And this is a sacred tradition that we follow before we start any event. And now, to take the proceedings further, may I now invite the representative of our book running lead manager, Mr. Chandresh Cheda, Managing Director, JP Morgan India, to deliver the opening address. Let's welcome him on stage with a round of applause, everyone. Good morning, everybody. How are we doing? Uh, on behalf of the book running lead managers, it's our privilege to welcome you today at Physics Wallah's listing ceremony, a true landmark moment for all of us. Congratulations, Alak sir, Prateek sir, and the PW team, board members, and all the shareholders. What began as a passionate endeavor by Alak with a mission to make quality education accessible to every student in India has now grown into one of India's leading education platforms, empowering students from every corner of the country. PW has transformed the landscape of education in India using technology, making high quality learning affordable for millions of students. Today, PW stands as a symbol of innovation, dedication, and the power of technology to democratize education. I remember meeting Alak and Prateek for the first time in August 2023 and knew that they were building something special. There are very few companies that have the potential to use technology to create impact at population scale, and PW is one of them. The journey has resonated deeply with public market investors over the last few months, reflected in the robust demand from marquee global and domestic investors who anchored this offering, as well as non-institutional investors. The trust and enthusiasm shown by the investor community is a testament to PW's impact and future potential. As PW embarks on this new chapter as a listed company, we are confident in its ability to deliver exceptional value driven by student-first philosophy, relentless focus on execution, and a commitment to innovation. With its unwavering dedication to quality education, PW is poised to inspire and empower even more learners and educators in the years ahead. On behalf of JP Morgan and our core book running lead managers, I would like to express our sincere gratitude to Alak, Prateek, the entire management team of PW for placing their trust in us as their book running lead managers for this significant milestone in their journey. It has been our honor and a privilege to work with PW as it debuts in the public markets in India, ushering in a new era for education in India. The vision of Alak sir and Prateek and the dedication of the leadership team and employees have been instrumental in reaching this milestone. Your relentless pursuit of excellence and unwavering commitment to student success has set the stage for even greater achievements ahead. In closing, I would like to thank everyone who has contributed to this remarkable journey, including Amit, Vikram, Mayank, the entire finance team and legal team, as well as other teams involved at PW. Obviously, the teachers and students as well. Congratulations to the entire PW team on this outstanding achievement. We look forward to celebrating your continued success and the positive impact you will create in the years to come. Thank you, sir, for your address and for setting the tone. And up next, I'm delighted to invite Mr. Deepak Amitabh, Independent Director and Chairperson, Physics Wallah, whose strategic vision and commitment have played a key role in making affordable education reach every corner of India. Let's welcome him with an applause, everyone. Good morning, everyone. It's a pleasure to be amongst all the youngsters who have really provided the energy to reaching this day, and that is the listing ceremony of Physics Wallah Limited. As has been told already, it's the fastest growing education company to be listed on India's stock exchanges. And we are the first company that has reached a top line of 3,000 crore in less than 5 years. So that is a very, very remarkable thing. Now, PW
stands out in the Indian consumer internet space, not because of valuation or scale. ये बहुत important है समझना इस चीज़ को. यहाँ क्योंकि पहली बार जो है इस एजुकेशन सेक्टर में promoters जो हैं दोनों मिल करके post IPO also they are holding more than 70% in the post IPO also. और दूसरी बहुत important point है कि at a time when most of the companies जो शुरू में आती हैं before listing वो जो है exit कर जाती हैं IPO के समय में. ये एक ऐसा unique case है जहां not a single earlier investor has sold during the IPO. So these two things make it so distinguished from others. और एक बहुत important point है, करीब करीब 98.8 million subscribers हैं PW के, means almost touching 10 crores, जो कि ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन स्टूडेंट कम्युनिटी जो है इस पे ऑपरेट कर रहे हैं. बट केवल ये ऑनलाइन नहीं, it is one of the fastest offline growing network with 170 centers already opened in less than 2 years time. So what I want to bring it out here, हम लोग सुनते रहते हैं कि ऑनलाइन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या ऑफलाइन, या ऑनलाइन जो ऑफलाइन को रिप्लेस कर देगा. ये सब उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि आप एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हो एजुकेशन को. They are able to reach so many people, so many lives, just on a continuous basis, and that is where the success of PW stands for. और इंडस्ट्री जो है इसने जो है बहुत अच्छे भी दिन देखे हैं, बुरे भी दिन देखे हैं, और हो सकता है ज़्यादा बुरा समय देखा हो एजुकेशन सेक्टर में. बट in amidst all of these madness, I'll say, PW has stood like a beacon, जो होता है ना, of hope, not just for students, but also for the edtech industry. और ये मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ कि it is बहुत हार्ड होता है टू स्केल अप करना बहुत स्पीड के साथ, लेकिन अपना सेंट्रल मोटो जो है उसको नहीं भूलना. एंड टिल डेट PW has stood very firm on that they are able to hold that basic motto of reaching, teaching those people who can't afford, reaching every corner online, offline, और ये कंटिन्यूस बेसिस पे करते जा रहे हैं. और लास्ट में जो होता है मैं केवल ये बोलना चाहूँगा कि लिस्टिंग जो है एक फिनिश लाइन नहीं है, इट्स ए पार्ट ऑफ द प्रोसेस. इट इज़ अ डोरवे टू बिल्डिंग डीपर लर्निंग सिस्टम्स, expanding into cities that have waited the longest, and investing in the technology that makes quality learning possible for every single child who needs it. Thank you very much. Thank you, sir, for your warm and inspiring address. Well, now we move to the most inspiring segment right now to hear from the man himself who shaped the Physics Wallah journey. It is my honor to invite on stage a name synonymous with accessible, high-quality education in India, a teacher, a founder, and an inspiration to millions. Ladies and gentlemen, with a huge round of applause, please welcome Mr. Alak Pandey, whole-time director and CEO, Physics Wallah. Thank you, thank you, thank you, thank you. Everyone has said so much. मेरे पास कुछ बचा नहीं. मेरे जितने pointers थे दीपक सर ने ख़त्म कर दिए. Almost all of them. So thank you so much everyone for coming here, making up to here, and I think it's a good milestone to have the IPO coming in our way. It's a good milestone, good financial milestone, but the mission and vision is lot to left to be completed. अभी बहुत कुछ करने को बचा हुआ है.
ऑफ कोर्स ये बात सच है कि वी बोथ प्रमोटर्स होल्ड व्हाट मोर देन 70%। ये भी सच है कि हमने 3,000 करोड़ रुपए 5 साल के अंदर किए। ये सारी बातें सही है कि हम कंज्यूमर टेक के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक प्लेयर दिख रहे हैं, बट आई थिंक उन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिस तरह से लैंडस्केप इंडिया का पीडब्ल्यू चेंज कर रहा है, एंड दैट इज़ व्हाट यू टीचर्स ऑल द मैनेजमेंट स्टैंड फॉर। बिफोर पीडब्ल्यू देयर वॉज एन एरा जहाँ पे किसी भी बच्चे को अगर एक क्वालिटी एजुकेशन चाहिए होती थी तो उसके लिए उसको वो फीस पे करनी पड़ती थी जो शायद उसके घर में नहीं होती थी। वी ऑलवेज से दैट वी हैव राइट टू एजुकेशन, वी ऑलवेज से, बट इट वॉज नॉट देयर। किसी एक ऐसे बच्चे से आप बोलते हो कि 1 लाख रुपए दो तब आप एलिजिबल होगे आईआईटी का एग्जाम लिखने के लिए, नीट का एग्जाम लिखने के लिए, यूपीएससी का एग्जाम लिखने के लिए। इट्स नॉट फेयर टू हिम, इट्स नॉट फेयर टू हर। Our mission is to make this fair, and we'll stand for that. Listing is just a day. To all my brothers, all my sisters, all my friends, teachers, ये लिस्टिंग एक बहुत छोटा माइलस्टोन होगा हम लोग की लाइफ के अंदर। द बिगेस्ट मिशन क्या होना चाहिए हमारी लाइफ का, जो हो भी रहा है हर साल। वी सी रिजल्ट्स कमिंग फ्रॉम विलेजेस। ऑफ कोर्स वी आर प्राउड कि आज हम लिस्ट हो रहे हैं, हमारा आईपीओ हो रहा है, बट वी आर मोर प्राउड कि भारत के 500 गांव से हम डॉक्टर और इंजीनियर बनाते हैं। दैट इज द प्राउड ऑफ फिजिक्स वाला वी होल्ड, एंड दैट इज द प्राउड आवर टीचर्स होल्ड, एंड विल कीप होल्डिंग दैट। कोई पूछता था, जैसे हम लोग जब इन्वेस्टर्स के सामने जाते थे वो बोलते थे कि फिजिक्स वाला कहां कहां तक जाएगा, तो मैं वही बोलता था जो हम लोग ऑफिस में बोलते हैं, चप्पा 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 चप्पा। तो मैं क्लियर बोलता था कि जहां जहां मोबाइल है, जहां जहां इंटरनेट है, वहां वहां पीडब्ल्यू होगा। और ये सब पॉसिबल होगा बिकॉज ऑफ आवर अमेजिंग 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 टीम। ऑफ कोर्स सबने यहां बोला द मैन, द लेजेंड, द मिथ एंड एवरीथिंग एल्स, पर यार मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता था। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द अमेजिंग अमेजिंग टीम जो हमारे साथ यहां इस कमरे में मौजूद है। लोग मुझे एकदम भरी आंखों से देख रहे हैं। एंड पीडब्ल्यू इज नॉट अ कंपनी जहां हमारे लिए कोई एक सीएक्सओ है तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या हमारे लिए कोई पर्टिकुलर टीचर है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है उस भीड़ के अंदर वो वहां पे एक लड़की बैठी हुई है सृष्टि नाम की, राइट, मैनेजिंग ऑल आवर इवेंट। दैट इज आवर स्ट्रेंथ एट द ग्राउंड, एट द बेस, दैट इज आवर स्ट्रेंथ। सो ऑल ऑफ यू सिटिंग हियर, यू ऑल आर माई स्ट्रेंथ, आवर स्ट्रेंथ। आवर विजन इज मच 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 बिगर देन बीइंग लिस्टेड। वी हैव टू बिकम the one who provides education to each and every kid. I always say this कि भारत में टैलेंट की कमी नहीं है। वी आर द मोस्ट टैलेंटेड नेशन इन द वर्ल्ड, और हम इकोनॉमी में भी वो चीज दिखा रहे हैं। ईयर ऑन ईयर वी आर बीटिंग अनदर कंट्री, इज अ जायंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड कमिंग लार्जर, कमिंग ग्रेटर एवरी ईयर। वी आर द कंट्री हु गेव जीरो टू इंडिया, वी आर प्राउड ऑफ दैट। बट द ओनली प्रॉब्लम विथ अस इज, एंड लिसन दिस वेरी केयरफुली, देयर इज एन आइंस्टीन इन इंडिया who is selling tea on the roads of Bihar. There is a Madam Curie in India who is selling momos on the roads of Gurgaon. And we have to filter them, bring them to the real Indian economy. That is the mission of Physics Wala. Thank you so much. Thank you. Well, I think the applauses say a lot. Thank you, sir, so much. And thank you for actually making high quality education accessible. Like you said, chappa chappa. Har jagah ye education available hai. And thank you so much for that. And up next, now I'm going to call someone who has been an instrument in shaping PW's technology, strategy, and scale, an integral part of PW's journey. Please welcome Mr. Prateek Maheshwari, Whole-time Director, Physics Wallah. गाइस मोमेंट है। वी हैव मेड इट, वी हैव मेड इट। इलाहाबाद के कमरे से एक वाइट बोर्ड के साथ, एक कैमरा के साथ जो जर्नी की शुरुआत हुई थी, वो जर्नी अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आ गई है।
जोरदार तालियां मेरी टीम के लिए, मेरे टीचर्स के लिए। लेकिन मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत पेन पेंसिल से करी थी। लेकिन मुझे आज भी मेरी फर्स्ट क्लास लाइव क्लास याद है, जब सर पढ़ा रहे थे, वो क्लास क्रैश हुई थी। फर्स्ट लाइव क्लास के क्रैश होने से लेके आज 5,000 टीचर्स, 18,000 एम्प्लॉयज़, 10 करोड़ बच्चे इन 5 सालों में हमने जोड़े हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है हमारे लिए, और वो भी एक ऐसे सेक्टर के अंदर जिसने जिसमें हमारे कंपटीशन के पास में बहुत पावर थी, बहुत पैसा था, पर हमारे पास में था स्टूडेंट लव, स्टूडेंट ट्रस्ट। उसी की वजह से हम आज यहाँ पर पहुँच पाए हैं। लेकिन एज वेल एज हमारे पास में था विजन, विजन की भारत के अंदर हर कोने के अंदर, लेकिन चाहे बच्चा किसी विकास से हो, चाहे भी किसी सोसाइटी के किसी वर्क से हो, कोई भी लैंग्वेज बोलता हो, उसको मोस्ट अफोर्डेबल विद द हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन का एक्सेस होना चाहिए। इसी विजन के साथ हमने कंपनी बनाई है। कैपिटल मार्केट का सफ़र भी बहुत इंटरेस्टिंग रहा। लेकिन कैपिटल मार्केट के अंदर एक बहुत कॉमन क्वेश्चन हमको फेस हुआ कि यार, इस सेक्टर ने बहुत फेलियर्स देखे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? वंस इन फॉर ऑल इस क्वेश्चन का आंसर मैं सेटल करना चाहता हूँ बाय सेइंग, लड़का अच्छा है, मोहल्ला खराब है। लड़का अच्छा है, मोहल्ला खराब है। लेकिन बट अब इस लड़के का मोहल्ला बदल गया है। नाउ आई एम इन टॉप 500 कंपनीज ऑफ विच इज अ पब्लिक लिस्टेड कंपनीज। अब मेरा कंपैरिजन कंज्यूमर इंटरनेट से होना चाहिए। अब मेरे टैम का कंपैरिजन, मेरी ग्रोथ का कंपैरिजन, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी का कंपैरिजन कंज्यूमर इंटरनेट कंपनी से होना चाहिए। हम अंडर 100 रैंक्स बनाते हैं इन 38 एग्जाम कैटेगरीज। ये टीम जो यहाँ बैठी है हमें टॉप 100 कंपनी इन इंडिया बनाएगी। ये एग्जाम फाउंडर्स का है, ये एग्जाम मेरे टीचर्स का है, ये एग्जाम मेरे मैनेजमेंट का है। 2 years of time, we will reach in 100 companies in India. This is a special moment. जितना भी तारीफ हमारे टीचर्स की जाए उतना कम है। 90% टीचर्स आज भी लाइव क्लासेस के अंदर, विद्यापीठ के अंदर पढ़ा रहे होंगे। कुछ टीचर्स हमारे साथ में हैं, लेकिन 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे लाइव क्लास लेना, उसी स्माइल के साथ, उसी एनर्जी के साथ छोटे छोटे डाउट्स को सॉल्व करना। हेड्स ऑफ टू यू गाइस, हेड्स ऑफ टू यू गाइस। मेरे लेक्चर फैकल्टीज, मेरे डाउट फैकल्टीज, मेरे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, आप लोगों की मेहनत की वजह से हम आज यहाँ पहुँचे हैं। हम इंडिया की सबसे आइकॉनिक कंपनी बनाने जा रहे हैं, सबसे आइकॉनिक कंपनी, और ये पहली ऐसी कंपनी होगी जो टीचर्स ने बनाई होगी। थैंक्स टू ऑल ऑफ योर एफर्ट्स। मैनेजमेंट टीम, बिजनेस टीम, ऑपरेशंस टीम, टेक टीम, आप लोगों के लिए तो एक सिंपल मैसेज है, अंडर 100 लेके आना है, दैट्स ऑल। थैंक यू टू माई इन्वेस्टर्स, संदीप सिटिंग हेयर, DQ, दे आर द अर्ली बैकर्स। इन्होंने हमें तब इन्वेस्ट किया जब हमें शायद PPT बनाना भी नहीं आता था। बट थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। Hornbill Capital and Dave is here from Lightspeed, as well as our future investors. पोस्ट लिस्टिंग के बाद हमारी जिंदगी में क्या बदलेगा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बदलेगा। हम पहले भी स्टूडेंट्स के लिए काम करते थे, आगे भी स्टूडेंट्स के लिए काम करेंगे। हमने पहले भी प्रॉफिटेबिलिटी चेज करी है, हम पहले भी फ्रूगल थे, आज भी आगे भी फ्रूगल रहेंगे। बट IPO लिस्टिंग के साथ में जो ये हम डोमेस्टिक कैपिटल, रिटेल इन्वेस्टर्स का रेस करते हैं, वो हमको और जिम्मेदार बना देता है। ये वही मिडिल क्लास इंडिया है जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, उसी इंडिया को हम पढ़ाते हैं। तो दैट मेक्स आवर जॉब इवन मोर रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट वैल्यू फॉर आवर फॉर अपकमिंग शेयर होल्डर्स। एंड I can tell this with 100% confidence. I have built a great product, I have built a great team, I have built a great culture, and this will be a great investment for you guys. Thank you so much. This is my time.
Thank you, Mr. Prateek, for showing that gratitude and inspiring to what the future will look like. Once again, let's give him applause, everyone. All right. Our next speaker has played a pivotal role in driving innovation, transparency, technology adoption, and global recognition for India's exchanges. Under his leadership, the NSE continues to strengthen its position as one of the world's largest and most trusted securities market. We are deeply honored to have him here with us today as we celebrate the landmark listing of PhysicsWallah Limited, a proud moment not only for the company but also for India's education and digital ecosystem. May I request Shri Ashish Kumar Chauhan to please join us on stage. Let's give him an applause, everyone. Shri Deepak Amitabh, Chairman and Independent Director, PhysicsWallah. Shri Alak Pandey, Co-founder and CEO, PhysicsWallah. Shri Pratik Maheshwari, Co-founder, PhysicsWallah. Shri Amit Sachdeva, CFO, PhysicsWallah. Shri Chandresh Chheda, JP Morgan India. Shri Shubham Mazumdar, Kotak Mahindra Capital. Shri Sudarshan Ramkrishnan, Goldman Sachs India. Shri Arvind Ganeshan, Axis Capital. Board members, employees, teachers, family members, media personnel, students, distinguished guests, ladies and gentlemen. Good morning and a warm welcome to all of you at NSE for the listing ceremony of PhysicsWallah Limited. NSE is proud to welcome PhysicsWallah in our family of listed corporates, which becomes 2,896th company to list with us, further strengthening the vibrant and growing ecosystem of listed enterprises. In some ways, I have seen the journey of PhysicsWallah, and last week also in one of the companies that got listed, I said I have a proprietary but not ownership interest in that company. Similarly, in PhysicsWallah, I have had a very interesting interaction around three and a half years back. I was in Delhi and somebody called up saying, some people called PhysicsWallah want to come and meet you. And I said, why not? The name is interesting. And I had not heard of it. So two of them were to come, but one only came because the other was probably teaching. And that boy came in t-shirt and jeans and slippers. And in the hotel where I was, that hotel did not allow him to enter where I was sitting because he was in slippers. And it has happened to me before, where I was not allowed to enter around 40 years back in similar hotels. So I was like amused that people like me are still existing because I used to walk in slippers even at that time when I met him. Only recently I've been advised to wear shoes. But first time, when I came here, first time I saw both of them were wearing shoes. So congratulations. And so we had, I think we are running out of time, but interestingly, I asked him, what is your business model? And I said, how many students you have? And he said, 92 lakhs. And I said, how much you charge? He said, 2,000 rupees. And we have somebody who has sold the goat and became a doctor. And so that was a very interesting story. And congratulations what you did. And Pratik and Alak both, that this is a new India, and you are creating a even newer India, so congratulations. India today is the fourth largest economy and the fourth largest capital market in the world. Since NSE started operations in 94, the market capitalization of listed companies has grown 132 times and now is 474 lakh crore or 5.4 trillion US dollars. A public listing is the beginning of a new chapter, one that reflects the company's performance, governance standards, leadership, and the spirit of entrepreneurship. We are proud to offer PhysicsWallah access to a broad investor base and a fair, efficient, and transparent market ecosystem. I congratulate the entire team of PhysicsWallah, merchant bankers, Kotak Mahindra Capital, JP Morgan India, Goldman Sachs India, Axis Capital,
legal advisors, Shardul Amarchand Mangaldas, PR agency, Ad Factors PR, and everyone else associated in this listing for their collective accomplishments. Today's listing is a milestone in the partnership between NSE and PhysicsWallah. Together, we shall continue to work towards our shared purpose of making capital markets accessible to every Indian. We look forward to support you in all your continued growth and future fundraising endeavors. May your journey on NSE as a listed company be impactful, prosperous, and enduring. Thank you. Jai Hind. Thank you so much, sir. And thank you for sharing the secrets with everybody here as well. All right. And now we come to the memento exchange. To mark this significant milestone, I would like to invite the PhysicsWallah management team, Mr. Alak, Mr. Pratik, and Mr. Amit to join us and accept the memento from NSC, from Shri Ashish Kumar Chauhan here. Please join us on stage. So Mr. Shri Ashish Kumar Chauhan will be presenting the memento to PhysicsWallah Limited, the NSC memento, a box of that's the significant bell, and then there is a coffee table book. And then we have a box of special listing badges. That's proud to be listed badges. Now requesting the entire team of Kotak Mahindra Capital Company Limited to please join us. And now post this, we will be moving towards the bell ringing ceremony. The rest of the memento exchanges will happen after that. And meanwhile, I would like to invite on stage Mr. Alak, Mr. Pratik, and probably for the first time at the NSE, the students of PhysicsWallah to step forward. Well, this is the moment that everyone has been waiting for. This marks as a new chapter, a moment that will go down in the history. And like I mentioned, this is probably the first time that the students are joining here as well. Right now, you all have to make sure to keep the energy high. Make sure that you join me for the countdown. When we do the last 10 seconds countdown, please make sure be seated, not to block the cameras, but keep the energy high and make sure we do the countdown last 40 seconds approximately to do. Are you ready? Is the energy going to be higher than this? Yes? Okay, we all are excited. Everybody is here on stage. The last almost 25 seconds to go. Let's do one thing. Just for the 10 seconds, let's keep the continuous applauses so we see the excitement here. Keep the hootings, the cheerings going on. We will do a countdown. 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
as we edge towards this historic moment, we have with us a shining example of what the PW student community represents. That's determination, resilience, and excellence. Please join me now in welcoming Miss Beauty Jha, NEET topper and a proud Physics Wala student who has made all of us incredibly proud with her achievements. We would love to hear from her, so let's give a round of applause to her, please. नमस्ते मेरा नाम ब्यूटी झा है। करेंटली मैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कर रही हूँ, 3rd ईयर में हूँ। अभी मैं बहुत डरी हुई हूँ। आई एम वेरी नर्वस, अगर कुछ गलती से निकल जाए तो प्लीज़ सॉरी। थैंक यू सो मच। Talking about my family background, so I come from a very lower middle class family. मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, मधेपुरा ज़िला। और मेरे पापा पढ़े नहीं हैं, बट उनका हमेशा से बचपन से सपना था कि उनके बच्चे पढ़े। हमेशा से कहते थे कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो तुम्हें कभी ना करना पड़े। मेरी कहानी शुरू होती है 2020 में कोविड लॉकडाउन लगा। मेरा 10th जस्ट ख़त्म ही हुआ था। 11th में हम गए क्योंकि पापा का सपना था डॉक्टर बनाने का, तो मेडिकल स्ट्रीम ले ली, वही बायो फिज़िक्स केमिस्ट्री। मेरे जो साथ में फ्रेंड्स थे जिनके साथ मैंने 10th पढ़ी थी, और मेरा 10th में बहुत आई वॉज अ डिस्ट्रिक्ट टॉपर, बट मेरे फ्रेंड्स सब अलग होने लगे। कुछ कोटा मूव कर गए, कुछ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स। मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज नीट और जेई इज़ अ काइंड ऑफ एग्ज़ाम जिसके लिए बच्चे कोटा या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए देते हैं। और बहुत हिम्मत करके एक बार मैंने मेरे पापा के एक इंस्टीट्यूट से बात भी करवाई थी। वहाँ पर बोला था कि 2 साल की फ़ीस 3 लाख रुपए है, डिस्काउंट करके 2 लाख रुपए दे देंगे ना। तो फिर इतना मैंने फ़ोन रख दिया और मैंने बोला पापा इतना तो अगर आप पूरे साल कमाओगे, कुछ खर्चा नहीं करोगे, इकट्ठा करोगे, तब भी नहीं दे पाओगे, तब तो मैं बन ही नहीं पाऊँगी। और क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन का टाइम था, पापा का जॉब छूट गया। बीइंग एन एल्डर चाइल्ड ऑफ द फैमिली, मेरे 2 छोटे भाई भी हैं, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर के रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम उम्र में ही बहुत बड़ी बन गई थी। आई स्टार्टेड गिविंग ट्यूशन्स, होम ट्यूशन पढ़ाया, घर पे ट्यूशन पढ़ाया पापा ने। लेकिन मेरे पापा रुकने वालों में से नहीं थे। उन्होंने ठेला का काम शुरू किया। हाइजीन इतना ज़्यादा आ गया था मोमोज चाउमीन का कि उतना चला नहीं, बट वहाँ पर भी मैं उनको मदद करती थी जितना हो सके। 11th एंड 12th आई लिटरली वेस्टेड घर की फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने में या फिर पापा को सपोर्ट करने में, और मेरी कुछ पढ़ाई नहीं हुई। ऐसे में बहुतों ने कहा कि यार इसको नीट क्यों दिलवा दिया है, शी इज़ जस्ट वेस्टिंग हर टाइम, नहीं निकलेगा। हमने खुद अपने बच्चों को यहाँ भेजा था, उनका नहीं निकला, और तुमने नीट दिलवा दिया है, कुछ कोचिंग भी ज्वाइन नहीं करवाई है। शी कैन डू, वेस्ट कर दी तुमने इसकी लाइफ। एंड आई लिटरली फेल दैट। तब मैंने यूट्यूब पर अलग सर, आई फाउंड हिम, मुझे भी दिख नहीं रहे हैं सर। अलग सर के लेक्चर्स, ऑफ कोर्स वाइट बोर्ड पे। तो 11th 12th में मैंने जितना पढ़ा है यूट्यूब से, अलग सर को देखकर, और यूट्यूब पर जितना भी मुझे मिला है। उसके बाद 12th क्लास में सबसे पहला बैच आया था लक्ष्य नीट। थैंक्स टू गॉड कि उस टाइम पर, मेरे टाइम पर, दैट वाज द फर्स्ट बैच, और दैट वाज 4000। जब मैंने मेरे फ्रेंड्स को बताया कि मैं 12th क्लास में लक्ष्य बैच से पढ़ रही हूँ, दे सेड अच्छा 4000 रुपये 1 महीने का होगा। मैंने कहा नहीं यार, ये 1 महीने का नहीं है, पूरे 1 साल का है। I studied from the Lakshya NEET batch in 12th class. I scored 95% in 12th class just by online study. अब क्योंकि 11th में टाइम नहीं मिल पाया, घर की स्थिति वैसी थी, प्रिपेयर नहीं कर पाई, तो 12th के जस्ट बाद आई sat in the first NEET का attempt and my score was 545. Being from a general category कुछ नहीं मिला। अगैन पीपल स्टार्टेड टेलिंग कि अरे ऑनलाइन नहीं होती है पढ़ाई, 4000 में क्या ही कोर्स दिला दिया इसको, हम तो अपने बच्चों को कोटा भेजा था फिर भी नहीं निकला, तुम कैसे निकाल, तुम्हारी बेटी कैसे निकाल लेगी। सो बट आई हैड बिलीफ एट PW, और मैंने जब एक फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, मैंने एक ड्रॉप ईयर लिया और उसमें मैंने यकीन बैच ज्वाइन किया था। दैट वाज अगेन इन 4000 फॉर द एंटायर 1 ईयर। वहाँ के टीचर्स वर जस्ट ऑसम। वहाँ पे मेरे टेस्ट में स्कोर अच्छे आने लगे। जो 11th मेरी वीक थी वो मैंने कवर अप करना शुरू किया। 12th मेरी अच्छी थी ही। पूरे 1 साल कंसिस्टेंटली आई स्टडीड। उसके बाद इट वाज 7 मई 2023 माई नीट का सेकेंड अटेम्प्ट।
मैं एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंची और मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया। लास्ट टाइम मैं थोड़ा हड़बड़ा गई बट एग्ज़ाम अच्छा गया। पापा को आकर बोला कि पापा एग्ज़ाम अच्छा गया है, निकल जाएगा, इस बार मिल जाएगा, एटलीस्ट कॉलेज मिल जाएगा। तो पापा काइंड ऑफ होते पेट में बात पचती नहीं है तो सबको बोलने लगे कि बोल रहे इसका हो जाएगा। देन पीपल अगेन स्टार्टेड ट्रोलिंग, ऐसे नहीं होता है, ऐसे हर कोई एग्ज़ाम आने के बाद यही बोलता है कि हो जाएगा। देन इट वाज 13 जून 2023 एट 9 PM, रात के 9 बजे मैं गांव में थी और तभी मेरे फ्रेंड का फ़ोन आता है, ब्यूटी रिजल्ट चेक कर, रिजल्ट आ गया है। नेटवर्क वॉज नॉट वर्किंग दैट टाइम इन एट विलेज। सो मैंने मेरे फ्रेंड को फ़ोन किया कि यार मैं तो नहीं देख सकती रिजल्ट, मैं तुम्हें मेरा रोल नंबर वगैरह सेंड कर, तो मुझे देख कर बता दो। एंड ही सेंट मी द फोटो, दैट वॉज ब्यूटी झा, स्कोर 660, ऑल इंडिया रैंक 4809। एंड उसके बाद आई गॉट लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज इन न्यू दिल्ली इन द वेरी फर्स्ट राउंड फ्रॉम जनरल कैटेगरी। एक टेंशन जो मुझे थी कि मैंने नीट निकालिया लेकिन एमबीबीएस करना भी इज़ नॉट, यहाँ पर भी पैसे लगते हैं, लाइक आपको ट्रैवल एक्सपेंसेस, इफ़ यू आर स्टडिंग इन हॉस्टल दिस हॉस्टल का एक्सपेंस, बहुत सारी चीज़ें। देन मेरे दो छोटे भाई जो कि अभी तक तो है ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टिल पीडब्ल्यू अलग सर ने बहुत हेल्प की। आई एम, अभी मैं घर की बेटी की नहीं बेटा की तरह अपने घर में हूँ और सब कुछ मैनेज कर पा रही हूँ। इट ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ पीडब्ल्यू, बिकॉज ऑफ आज मैं आई एम जस्ट अ वन स्टूडेंट बट आई एम रिप्रेजेंटिंग थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड फ्रॉम एवरीबडी साइड थैंक यू सो मच। अगर टीचर्स नहीं होते, पीडब्ल्यू नहीं होते, आई वुड नेवर हैव बीन स्टैंडिंग हियर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। Well, I actually got goosebumps listening to her story. Thank you, Beauty. आपकी जो आपने स्टोरी शेयर की, इससे कई लोग जो यहाँ हैं, जो यहाँ ये लाइव देख रहे हैं, आई एम श्योर दे विल गेट ट्रूली इंस्पायर्ड और शायद इससे वो भी ये डिटर्मिनेशन के साथ इतना पढ़ के और पीडब्ल्यू के साथ जुड़ के आगे और बढ़ेंगे. सो वंस अगेन लेट्स गिव एन अपलॉज टू ब्यूटी एवरीवन. And for all the students as well who make sure that they are being a part of all of this and then they make their journey ahead with PW. Thank you. And now we move towards another set of memento exchange, and that will be from Physics Wallah to all the BRLMs, legals and statutories. So I would request Mr. Alak, Mr. Prateek and Mr. Amit to please join us on stage to hand over these mementos. Let's welcome them with an applause. Thank you. Now requesting the entire team of JP Morgan India Private Limited to please join us on stage. Let's give an applause to them, everyone. Thank you so much. Now requesting the entire team of Kotak Mahindra Capital Company Limited to please join us.
Thank you so much. Now requesting the entire team of Goldman Sachs India Securities Private Limited to please join us. That's the entire team of Goldman Sachs India Securities Private Limited. Post this, requesting next the team of Axis Capital Limited to please join us. Yes, now we have Mr. Shubham Majumdar, Managing Director, Kotak Investment Banking, joining us to share a few words. Let's give him an applause, everyone. Good morning, everyone. On behalf of the board, the founders of Physics Wallah, all the employees, and the book running lead managers to the IPO, I'd like to thank this wonderful audience to witness this historic listing. Special thank you to NSE for hosting us. Physics Wallah is a very, very special company and clearly marks the onset of the EdTech revolution joining in the listed space. They have done many things different. Alak sounds very similar to Alag, and they have created a very Alag company in that sense. And for a long time, a lot of people have basically complained that education and EdTech haven't got any share in the listed universe of India Inc. And I think today, with this fantastic performance that caps effort for many months, basically they have made that into a history and clearly marking onto a new journey. It's been a privilege to work with the team that is not just building a company, but rendering access to great education in India. For the broader education sector, which constitutes 4% of India's GDP, Physics Wallah will be the mantle bearer going forward, marking the participation of the big sector in the listed universe of India. And that itself deserves a lot of kudos. We really appreciate all the effort that the promoters, the management, and the finance team have put in. We thank all the other participants in the IPO for this great journey, and this is just the beginning. All the very best for a fantastic listed journey and great track record of shareholder value creation. Alak, Pratik, everyone. Thank you. Thank you. Thank you so much. I really like how you said that Alak sounds like Alak. That ideology really was interesting. Well, now I would like to call upon stage Mr. Amit Sachdeva, CFO, to share the closing remarks. Let's welcome him, everyone. Thank you, thank you. There are a lot of thank yous coming your way, and each thank you has to actually come with a much larger applause than where we are today actually. So I think the journey started by Alak sir himself. I don't know Alak sir, where is he? But a bigger applause for Alak sir, for igniting the spark 5-10 years back, for landing us where we are today. Pratik sir, I think he is the alpha in any room that he walks into. Give it up for Pratik sir. I'll come to the students, in the last, but I think for all our teachers, we have over 5,000 teachers represented by so many teachers sitting here. A big applause for all the teachers here, please. Our early investors, I think we have Sandeep sir here, we have all our investors. There's a big round of applause for backing us right from the start, when Westbridge and GSV, but Deborah just left, she came in.
Next big applause is obviously for all the people who've put in the hard work. 18,000 employees, each one of them is actually watching this live link, sitting in office, teachers teaching, each one of them, everybody sitting right at the back. A big round of applause for those 18,000 people, sitting here and outside. A special mention to our finance team. I think if there's anybody who's, totally believed in actually getting this done, our finance team, our legal team, our HR team, every team who's been able to actually get us to the finish line today. Big round of applause for everybody sitting out here. Our partners, I think bankers, our lawyers, our counsel, everybody, our auditors, each one of them supported us in this journey. I don't think there was ever a single guy who said, we don't believe in this cause. And I think the reason why we are here today is because each one of them believed in that cause, actually. A big, big round of applause for every one of them, actually. Our independent board of directors, Nitin sir is there, Deepak sir is there, you heard Deepak sir earlier, and Rachna ma'am, thank you so much. If there's one call that has gone to them at the midnight and they've attended is our board meetings happening midnight. A big round of applause to each one of them. Thank you so much for supporting us, ma'am. And lastly, but most importantly, the students, I think Pratik sir said we have almost like 10 crore students, 10 crore se zyada bachche hamare sath jude hue hain. And I think this is the reason why we are here today is because of the trust and love of each of that, every student that has joined, joined us over the last 5 years. Thank you so much. Thank you, for getting us here where we are today. And like they said, this is day zero for us. We are just getting started. So a big round of applause for Team PW, please. Thank you. Well, rightly said, sir. You all are just getting started. It's the start of something new, the new beginning. But before I conclude the formal proceedings here, a sincere gratitude to the National Stock Exchange for welcoming Physics Wallah and for partnering with us on this historic occasion. Let's give a round of applause for the NSE, everyone. And right now, this moment, I would want to congratulate each and everyone present over here in person and virtually because this is your day, this is your moment. PW Ltd, that is Physics Wallah Limited, is officially listed on the National Stock Exchange. Let's make some noise, everyone. So yes, let the celebration continue now as we conclude the formal proceedings. This is Priyanka Lalwani now signing off. I hope that you enjoy your day ahead. We have breakfast in the adjoining area here. Please continue with the celebrations and keep enjoying, keep educating yourselves and the people around you. So let's give an applause for this moment, everyone. Thank you so much for being a part of this and have a great day ahead. Thank you.